students, how are you all? I am your English teacher Monika Angrish. So what we are going to do today? We are going to study a new chapter, Simple Past Tense. You have studied past tense earlier. Past tense का मतलब क्या होता है? Past tense का मतलब होता है जो बीत गया. ठीक है? तो अब हम उसके और आगे स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल दिया है, I went to the fair yesterday. यहाँ पर went है. Went क्या है? It is a past tense. We usually studied in the library before exams. They met Miss Verma at the station. The words printed in bold are verbs and they are in the simple past tense. अब इसमें जो went use हुआ है, studied use हुआ है, met use हुआ है, ये सब क्या है? Past tense में. They tell us about actions that took place sometimes in the past. जो बीत गया है, ये actions तब ये लिए गए. I went to the fair yesterday. They also tell us about some past habitual actions. We usually studied in the library before exams. Studied मतलब simple past tense. The simple past tense tells us about actions which took place sometimes in the past or talks about some past habitual actions. जो हमें past के बारे में बताता है, वो क्या होता है? Simple past tense. चलिए. We'll do exercise A. Exercise A का first one. It says fill in the blanks with simple past tense forms of the verbs in brackets. अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने brackets में verbs दिए हैं. उनको use करके आपको इसमें simple past tense में convert करना है. जैसे first one is I dash the answer to that question. और brackets में क्या दिया है? No. KNOW दिया है ना? No. तो इसको जब हम past tense में लिखेंगे, हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना I know the answer to that question. नहीं. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? I knew the answer. मुझे आंसर पता था. Knew the answer. I knew the answer. Fine. ठीक है? Now the second one. The Indian team dashed the match. Lose the match. वो तो अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम past tense में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? The Indian team lost the match. Lost the match. ठीक है? Now the third one says the Australian team dashed the match. Win क्या आएगा यहाँ पर? सोचिए. यहाँ आएगा Australian team win नहीं आएगा, यहाँ आएगा won the match. ठीक है? Now the fourth one is we dash the sharp objects away from the baby's reach. We keep the sharp objects. यहाँ keep दिया word, और जब हम इसे simple past tense में करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको we kept the object. Kept रखा था. Kept object. ठीक है? Now the fifth one says the fisherman dash his boat. Row लिखा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? The fisherman rowed his boat. The bird dash over the tree. Fly है brackets में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? The bird flew over the tree. Father dash a new bicycle for me. Buy लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? Father bought a new bicycle. The dog dash Vani when she was playing with the puppies. Bite लिखा है, तो इसको past tense में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? The dog bit Vani. ठीक है? चलिए एक्सरसाइज बी पे आप आ जाइए. एक्सरसाइज बी बहुत इजी है. इसमें दे हैव गिवन यू अ पैसेज और आपको जो हाईलाइटेड वर्ब्स हैं उनको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM. ये अभी बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस की, तो जब हम इसे पास्ट टेंस में लिखेंगे कैसे लिखेंगे?
Every day I woke up. Wake का क्या हो जाएगा? Woke. I do yoga. I did yoga. Then I take a shower. Then I took a shower. And get ready for school. ठीक है, तो ये जो है ये सेंटेंस में जितने भी बोर्ड में है ना प्रेजेंट टेंस में, उनको आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है. और ये आप एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ योर कैट्स, यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. एंड आई वुड रिक्वेस्ट द कैट्स कि लेट देम डू व्हेन दे अंडरस्टैंड द थिंग्स. कोशिश करने दो उनको, चाहे वो गलत करें, पर एक बार करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत. ठीक है, तो लेट देम डू दिस एक्सरसाइज देमसेल्व्स. चलिए, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज सी. Fill in the blanks with simple past tense with the verbs in the box. अब इन्होंने बॉक्स में verbs दिए हैं, वहां से हमें वो words उठाने हैं और उनको हमने simple past tense में convert करना है. ठीक है, so first one is exercise C. Exercise C का first. My mother dash Mrs. Verma in the market. अब ऊपर वाले बॉक्स में से देखिए क्या आएगा इसमें? मीट. My जब इसे पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या आएगा? met. My mother met Mrs. Verma. Number 2. She dash us about the new book she had read. Tell है ऊपर, है ना? तो tell का क्या बन जाएगा पास्ट टेंस में? told. She told about new book. Third is they dash late to school today. They came, come का क्या हो जाएगा? They came. They came late to school. Fine. Now number 4 is we dash alms to the poor and the needy. We gave. Gave. Vani dashed this book yesterday. Vani bought. ठीक है, तो ऐसे आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है एंड डू इट इन योर नोटबुक्स. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द अदर एक्सरसाइज. इट सेज फाइंड वर्ब्स फ्रॉम द वर्ड ग्रिड. दे आर द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब्स. अब क्या है इसमें इन्होंने बॉक्स में जो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा ना वो वाले वर्ड्स दिए हैं. जैसे सपोज इन्होंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट टेंस में टेक. टेक का पास्ट टेंस क्या होगा? टुक. तो आपने ये बॉक्सेस है इसमें क्या ढूंढना है? टुक ढूंढना है. ठीक है, टुक कहाँ लिखा है इसमें? जैसे फील है, फील का क्या होगा? फेल्ट. ठीक है, रन का क्या होगा? रैन. कैच का क्या होगा? कॉट. विन का क्या होगा? वॉन. तो ये सारे आपको इस बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, सो द सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. So this was your simple past tense. चलिए अब हम next move on करते हैं next exercise पे. Simple past tense लिख रहे हैं. next हमारा past continuous tense. Past continuous. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना continuous वाला, सेम वैसे ही है. वो present था, ये past है. I was walking in the garden. They were watching a movie. अभी was talking. अब जैसे हमने पहले continuous पढ़ा था उसका मतलब क्या था कि जो चीज चलती रह रही है, रुकती नहीं है. Watching, जो आप continuously watch कर रहे हो, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? Continuous. Reading, लगातार रीड करते हैं तो वो क्या हो गया? Reading. ठीक है. The past continuous tense tells us about actions that were going on sometimes in the past. Was, were, ing form of the verb. I was walking in the garden. They were watching a movie. तो यहाँ क्या है? were past है, watching continuous है. ठीक है, so with I, he, she, it, any singular subject is third person, so we put was. और जहां पर प्लूरल होता है वहां क्या होता है? वर. तो सिंगुलर में भी यूज was और प्लूरल में भी यूज वर. I was walking in the garden when I saw the puppy.
Past continuous tense was walking expresses an action that was going on when something else happened. ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. Fill in the blanks with the past continuous form. अब हमने क्या करना है, इसमें past continuous form से verbs को fill करना है. इसमें आंसर नंबर 1. It says mother dash in the kitchen when the guest came. और ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, cook. तो ये क्या आएगा, mother was cooking, है ना. cook का क्या हो जाएगा, was cooking in the kitchen. cooking, ठीक है, mother was cooking in the kitchen. नंबर 2 पे आ जाइए. नंबर 2 क्या कहता है, the baby dash with its dolls when I entered the room. play दिया इन्होंने वर्ड, तो क्या हो जाएगा, the baby was playing. The baby was playing. It dash when I woke up. रेन है, सो इसका क्या हो जाएगा, it was raining. It was raining. It was raining when I woke up. Next is Jia dash the television when her friends came in. यहाँ watch दी है, तो क्या आएगा, Jia was. past tense में कन्वर्ट करेंगे इसे हम, तो क्या आ जाएगा, Jia was watching television. was watching television. Jia was watching television, है ना. Mona and Veena dashed to the market when I met them. go दिया इन्होंने ब्रैकेट्स में, तो क्या लिखेंगे, मोना एंड वीना वर गोइंग टू द मार्केट. 5th में आप क्या लिखेंगे, वर गोइंग टू द मार्केट. ठीक है. 6th क्या कहता है, 6th कहता है द ट्रेन्स डैश लेट बिकॉज ऑफ बैड वेदर. रन दिया है, तो रन का क्या बन जाएगा यहाँ पर, द ट्रेन्स वर रनिंग. were running late. ठीक है. Now the 7th one. The policeman fined the driver since he dashed the car rashly. Drive लिखा है. Since he was driving car rashly. Was driving car rashly. ठीक है. 8th is Rahul dash a lot when he returned from the field. Sweat लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, was sweating. 8th का आप लिखेंगे was sweating. ठीक है. सो ऐसे आपने ये सारे past tense में कन्वर्ट करने हैं. सो दिस वन इज एन इजी वन एक्सरसाइज, सो जस्ट फिनिश इट अप. चलिए अब हम आगे चलते हैं. अगली एक्सरसाइज है हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है. आ गया सिंपल, सॉरी आई राइट इट विद द ब्लैक वन. अब हम करेंगे, वो पास्ट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की. सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है. Simple future tense. चलिए, what is simple future tense? My grandfather will visit us tomorrow. Will visit, आएंगे, that is future, जो हम future की बात कर रहे हैं. They will come back next month. Will come back. We shall stay in Shimla till Friday. Shall stay.
The words printed in bold are verbs and they are in the simple future tense. They tell us about future events like somebody is going to visit, will come, shall stay. Note that we use tomorrow, next month and such words to suggest the future time. ठीक है? So, he will visit us tomorrow. So, will and visit is the verb being used. So, will क्या हो जाएगा? वो future tense को बता रहा है कि आएंगे, will visit us. ठीक है? So, we use short forms. इनमें हम क्या करते हैं? Short forms भी use करते हैं. जैसे I shall के लिए क्या करेंगे? I L. ठीक है? Apostrophe डाल के. We will के लिए क्या करते हैं? We apostrophe double L. I shall. I shall. We will. Will. They will के लिए they will. They will के लिए क्या करते हैं हम? They ऊपर apostrophe और double L. They will. ठीक है? They. And we use shall with I and we and will with other pronouns. ठीक है? Now let's start with the exercise A. Exercise A. First question. What does it say? Complete the sentences using the simple future form of the verbs given in the brackets. अब इन्होंने brackets में जो words दिए हैं, उनको हमें उन verbs को simple future tense में लिखना है. The porters dash the luggage. The porters carry लिखा है, तो क्या आएगा? The porters will carry the luggage. Will carry the luggage. Okay. Now the number 2 says. The train dash at 4:30 p.m. Arrive दिया है इन्होंने word कि train आएगी, तो हम कैसे लिखेंगे? The train will arrive. Will arrive. Train will arrive at 4:30 p.m. ठीक है? Now the third one says Sudha dash a letter to me. Right है, तो ये क्या हो जाएगा? Sudha will write a letter to me. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? Will write a letter to me. ठीक है? Now the fourth one is I dash the station by 4 p.m. Reach लिखा है, इसके आगे भी क्या लग जाएगा? Will लग जाएगा. Will reach. Will reach the station. Now the fifth one is Madhu dash me her book in the evening. Madhu will give. Will give. Will give. Sixth one is they dash the shop at 9 p.m. Close दिया है. They will close. They will close the shop at 9 p.m. Okay. Now the seventh one is Meena dash at the cultural event. Meena will sing. Will sing the cultural event. Now the eighth one is the doctor dash my grandfather tomorrow evening. The doctor will examine my grandfather. ठीक है? क्या आएगा? Will examine my grandfather tomorrow. Farah dash school on Monday. इन्होंने क्या दिया? फरा के साथ कौन सा वर्ब दिया है? इन्होंने दिया है वर्ब मिस. तो ये ना मैम को करवाने से पहले आप लोग करके दिखा दो फटाफट, और ये अपनी बुक्स को जब आपने जो ये एक्सरसाइज है ये करने के बाद अपने पार्टनर्स को देना है, एक्सचेंज करनी है नोटबुक्स एंड लेट देम चेक योर वर्क. और अपनी गलतियां, एक दूसरे की गलतियां निकालिए, उससे सीखेंगे आप. ठीक है? तो
अब 9th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Farah dash school on Monday. Farah will miss school on Monday. ठीक है, Farah will miss school on Monday. ऐसे ही लास्ट वाला आप अपने आप कीजिएगा। ऐसे आपने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर कैट्स। As much as you people are going to practice, you will learn more. है ना? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज बी, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट सेज change the tense of the following sentences into simple future tense. अब वो कह रहा है कि जो हमने नीचे sentences दिए हैं ना, इन पूरे sentences को किस में बना देना है? हमें कन्वर्ट करके simple future tense में बना देना है। जैसे फर्स्ट उसने दिया है वरुण plays the guitar, ये present tense में है कि वरुण गिटार प्ले करता है। तो जब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो कैसे, फ्यूचर टेंस में करेंगे तो कैसे करेंगे? वरुण shall play the guitar, shall play the guitar। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। Now the second one is Nishant books my ticket, Nishant will book my ticket, Nishant will book my ticket, right? So you have to write it in future tense, ठीक है? Now the third one says the carpenter makes wooden furniture. तो जब हम इसको future tense में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? The carpenter will make wooden furniture, है ना? Will make wooden furniture. We learn French on weekdays. तो यहाँ पर क्या आएगा? We shall learn French on weekdays. So यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? We shall learn French on weekdays. Now the fifth one says I dash clean my room in the morning. तो इसको जब हम future tense में लिखेंगे क्या लिखेंगे? I shall clean my room, shall clean my room. Easy? So this way you have to do these sentences. Sixth one is Satish wishes me on my birthday. So इसको हम कैसे लिखेंगे? Future tense में Satish will wish me, wish करेगा, wish me on my birthday. Fine? So this way you have to complete this exercise. I complete my classwork before others. तो इसको फ्यूचर टेंस में कैसे लिखेंगे? I will complete my work, I will complete my classwork, fine? Now the eighth one says my mother cooks pasta in the evening. My mother my mother will cook pasta. Fine? My mother will cook pasta. So this way you have to complete this exercise B. So few points you people have to remember about this exercise. This chapter is that the simple future tense tells about actions that will take place in the time to come. So
We shall visit you next week. We shall go to the park next week. This way, it is what it's saying. It's communicating that future में हम जाएंगे, हम visit करेंगे, ठीक है? He, she, it, you, they, any third person subject plus will plus original form of verb use करते हैं, ठीक है? So अब ये 3 एक्सरसाइजेस हमने की हैं, 3 चैप्टर्स ये जो हैं छोटे छोटे से, और ये सब टेंसेस से रिलेटेड हैं. तो आप ये टेंसेस का एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट को समझिए, अपनी क्लास में लगाइए, रोज रिवाइज कीजिए. जब आप रोज रिवाइज करेंगे आपको वो टेंसेस क्लियर होने लग जाएंगे. एक छोटी सी बात है, 3 टेंसेस हैं जिनको आगे डिवाइड करके और बना दिया गया है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. सो कीप दिस इन माइंड एंड स्टडी हार्ड and practice hard. Take care. Okay, bye.